Good morning, students. Today we are going to learn or understand admission of a partner, and from that we will understand sums, short sums. Third, calculate new profit and loss sharing ratio and sacrificing ratio. First sum, A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/4 share in profit. Students, first we will write down AB P&L old ratio. Three ratio 2. After that we will write C's share in profit 1/4. After that we will assume, suppose the firm's share 1, remaining share after giving C's share from firm's share 1 minus 1/4. Take the LCM. 4 minus 1 we will get 3/4. So this remaining share will be distributed by A and B in their old P&L ratio. Then A share becomes 3/4 multiplied by 3/5, 9/20. B share 3/4 multiplied by 2/5, 6/20. In the new share, C also comes, so C shares is 1/4. Here you will see the denominator is 20, so we have to make C shares denominator also 20. So we will multiply 5/5 to numerator and denominator. It becomes 5/20. So all denominator are same. So we can write 8 A, B, C P&L new ratio. We will write here numerator of all the sets 9, 6 and 5. So it becomes P&L new ratio 9:6:5. After that we have to find out sacrifice ratio. The formula of sacrifice: old share minus new share. First we will find out A sacrifice. A's old share is 3/5 and new share is 9/20. Here LCM is 20. 220 divided by 5, 4 comes, 4 3 जा 12. 20 को डिवाइड करो 20 से, comes 1, 9 1 जा 9. 12 minus 9, 3/20. A sacrifice is 3/20. Then B sacrifice find करें. Old share 2/5, new share 6/20. LCM 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 20 1 जा 20, 1 6 जा 6, 2/20. B sacrifices 2/20. So
Now we will write it as ratio form A B, sacrifice ratio or sacrificing ratio. Take numerator 3:2. So it is our answer, and this also is our answer. This sum is completed. Then we will forward to next sum. Students, let's start sum number 2. A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4/5 and 2/10. They admitted C as a new partner for 20% profit of the firm. Students, सबसे पहले लिखेंगे A B P and L old ratio 4/5 रेशियो 2/10. स्टूडेंट्स, रेशियो फॉर्म में हमें डिनोमिनेटर को सेम रखना होता है. उसके लिए हम एलसीएम लेंगे 10, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 10 1 जा 10, 2 1 जा 2. तो ये आएगा 8:2. स्टूडेंट्स, इसे हम कॉमनली 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 4 जा 2, 2 1 जा 2. ये आया हमारा पी एंड एल ओल्ड रेशियो. अब लिखेंगे सी शेयर इन प्रॉफिट. %20 means 20/100 means 1/5. Same as sum number 1. Suppose the firm's share 1, remaining share सी का शेयर माइनस करने के बाद 1/5. एलसीएम 5, 5 - 1, 4/5. 4/5 को ए और बी उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 4:1 में. और 4:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका न्यू शेयर आएगा. ए शेयर 4/5 को इस रेशियो में मीन्स 4/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 16/25. बी शेयर फाइंड करें. 4/5 इंटू 1/5 इट कम्स 4/25. न्यू शेयर में सी बी एडमिट होगा तो उसका शेयर है 1/5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर डिनोमिनेटर 25 है तो सी के शेयर में भी डिनोमिनेटर 25 होना चाहिए. इसलिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5/25 आ जाएगा. इस तरह से सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो इसे रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं. ए बी सी पी एंड एल न्यू रेशियो. न्यूमरेटर को ले लेंगे 16 4 5. इस तरह से न्यू रेशियो हमारा आ गया. ये हमारा वन आंसर. अब हम फाइंड करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो. तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. एज सैक्रिफाइस फाइंड करें. एज सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर ए का 4/5 माइनस न्यू शेयर 16/25. एलसीएम 25 को 5 से डिवाइड करें तो 5 5 4 जा 20. 25 को 25 से डिवाइड करें 1 इंटू 16 16. 20 - 16 4/25. एज सैक्रिफाइस. बी सैक्रिफाइस फाइंड करें.
ओल्ड शेयर 1/5, न्यू शेयर बी का 4/25, एलसीएम 25 को 5 से डिवाइड करें तो 5 मिलेगा, 5 वन जा 5, 25 को 25 से डिवाइड करें तो 1 मिलेगा, 1 4 जा 4, 5 माइनस 4 1/25, ये बी का सेक्रीफाइस। इसे रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, ए रेशियो बी, सेक्रीफाइस रेशियो। रेशियो के लिए न्यूमरेटर को लेंगे 4:1, इस तरह से हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 4:1। और इसी के साथ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स हमारा सम नंबर 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट शॉर्ट सम्स के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।